We're talking about the hypersensitivity reaction, and the thing is hypersensitivity, the word, you should mark the word hypersensitivity. Hyper means high, more. Okay? Yes, sir. And sensitivity means the ability to sense. Yes, ability to sense. So here we are discussing about the immune. Under the immunology we are discussing this topic. So this is for the immune cells. This is for the immune cells. When our immune cells become more triggered, it's become more activated or more triggered, then it will destroy our tissue. It will destroy our tissue. It means hypersensitivity reaction is a exaggerated response of our immune system which destroy tissue. Which destroy the tissue. Write it down. Hypersensitivity reaction is a exaggerated response of our immune system which eventually destroy our tissue. Which eventually, once again, hypersensitivity reaction is a exaggerated immune response which damage our tissue. Which damage our tissue. Clear? Yes? Fine. It means the fundamental, or you can say the hallmark characteristics of the hypersensitivity reaction is it basically destroy our tissue. It destroy the tissue. Now we will see how many ways our immune system basically destroy the tissue. So there are the 4 ways. So there is a 4 classification of hypersensitivity reaction. Yes. The first type is called as type 1. First is called as type 1 hypersensitivity reaction. Another one is called as the type 2. Yes. Another one is called as the type 3. Type 4. Then we have the type 4. That is called as the delayed. Very good. Type 4. Fine. Now, hypersensitivity reaction basically causes so many problems in us. It causes so many problems in us. It's explain why we have allergy. It's explain why we have allergy. It's also explain why person develop the autoimmune diseases. Why person develop the autoimmune diseases. Autoimmune diseases is basically a categories of diseases in which our own cells directed against our own immune cells directed against our normal cells. It start destroying. ये हमारे अपने ही सेल को मारने लगते हैं. Are you getting my point? Yes. Then you came across a person जो कि इसका जो डस्ट होता है, chalk dust, वो उसके नाक में जाता है, and he suddenly start difficulty in the breathing. सांस फूलने लगता है. ठीक है. Sneezing comes, wheezing sound, whistle, like अंदर से सीटी का आवाज आना स्टार्ट हो जाता है. Okay? Sometimes this oropharyngeal region, lips फूल जाता है, swelling. Okay? Sometimes आँख लाल हो जाता है. Sometimes नाक में बहुत उंगली करता है. नाक लाल हो जाता है. These all are the forms of allergy, which is due to the hypersensitivity reaction. Clear? Yes, sir. Now, hypersensitivity reaction में होगा क्या? तो पहला बात बोले कि हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है. इम्यून सिस्टम का एक सेल जिसका नाम है एंटीबॉडी, ये इट्स सेक्रेट इन अ मैसिव अमाउंट. इट्स सेक्रेट इन अ मैसिव और यू कैन से द लार्ज अमाउंट, और वो एंटीजेंस के साथ फाइट करते हैं. वो एंटीजेंस के साथ फाइट करते हैं, और ये फाइट करने में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. एंड द थिंग इज
पहला जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये नॉर्मल होता है, इसमें थोड़ा मोड़ा सिम्टम्स आता है, इट्स फाइन. बट व्हेन देयर विल बी अ सेकेंडरी एक्सपोजर तो इंसान का वॉट लगा देता है. तो इंसान का वॉट लगा, इट मीन्स कि फर्स्ट टाइम एंटीजन कोई आया, हमारा बॉडी अवेयर नहीं था, हमारा बॉडी ने उसके अगेंस्ट में कौन सा एंटीबॉडी सेक्रेट करेगा? आईजी. यस, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स आईजीजी. आईजीजी पहला करेगा, वो थोड़ा अमाउंट में होगा, फाइन. सेकेंड एक्सपोजर होगा, मैसिव अमाउंट में आईजीएम आएगा, मैसिव अमाउंट में आईजीएम आएगा. यू नो दैट आईजीएम किसके ऊपर बाउंडेड था? मास्ट सेल के. मास्ट सेल क्या रिलीज कर रहा था? ल्यूटोकाइंस, प्रोस्टाग्लैंडियंस, इजंट इट? यस. और ये सब क्या कॉज करता है? इन्फ्लामेशन. क्या कॉज करता है? द पर्सन विल सफर विद द सो मेनी साइन एंड सिम्टम्स. नाउ talking about each and what is called as the reaction in detail. So first we'll start with the type 1, type 2, type 3, type 4. I will rub the board first, then we will discuss because जगह यहाँ पे बहुत कम है. Starting with the types. So we discussed that we have the 4 types. Fine. Now each type having the different you can say the immune reaction or requirements also. Fine. So type 1 you can say the immune reaction, it involves the antibody. इसमें antibody क्या आ सकता है? Fine. Second type also involves the antibody. Third type also involves the antibody. But 4 types no antibody. Yes. No. Because it involves the cells, it involves the other immune cells. It is also called as the cell-mediated hypersensitivity reaction. Write it down. It is also called as the cell-mediated hypersensitivity reaction. Clear? Because it involves the antibody, it also involves the antibody, but it does not involve the antibody, it involves the cell. Okay? So it is called as the cell-mediated hypersensitivity reaction. Clear? Now इसमें एंटी करने के लिए एंटीबॉडी चाहिए तीनों में. हाँ न्यूट्रलाइज करने. हाँ. और इसमें सेल चाहिए, इम्यून सेल एक तरह का. ठीक? Fine. Now talking about the another thing, it is about the antibody. Now talking about कौन सा antibody किसमें involved होता है. Fine. So the antibody which is involved in the type 1 reaction, it is the IgE. It is a IgE. Okay. The antibody which is involved in the type 2, it is either IgG or IgM. IgG or IgM. Fine. In the third category, the antibody which is involved is again the IgG or IgM. IgG or IgM. Fine. Yes. Now talking about the antigen. So here this is about the antibody. Okay. Now talking about the antigen. So antigen इसके अंदर में free antigen होते हैं. Okay. In the type 1 reaction, the antibody which is basically participate, the antigen which is participate is a free antigen. What I mean by the free antigen? Free antigen is कि शरीर में वो किसी भी पार्ट में जा सकता है. शरीर के वो किसी भी पार्ट में जा सकता है. The example is the pollen grain. Pollen grain. So what happens? We will understood this mechanism by one story. Fine. So there is again our Shivam. तो शिवम एग्जाम में पास हो जाता है विद द टॉप रैंकिंग. एग्जाम में पास हो गया, ये खुश हो गया, तो ये फैमिली को ले जाता है पार्टी देने के लिए. ठीक है, वो पार्टी देने के लिए ले जाता है. एंड द थिंग इज कि जहाँ वो ले जाता है वो रेस्टोरेंट एक यू कैन से एक अच्छा फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में रहता है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, सो मेनी प्लांट्स इज देयर. ओके.
एंड क्योंकि वो वसंत ऋतु बोलते हैं ना, वो वाला ऋतु, स्प्रिंग सीजन, जहाँ पे फूल सब खिलना स्टार्ट करते हैं, और या सो वो महीना रहता है, एंड ही ब्रिंग हिज पेरेंट्स, इंटायर फैमिली विथ हिम, और ये लोग जाते हैं, ठीक है। जाने के बाद क्या होता है, तो अब फ्लावर्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स एक लाइक जर्माइनल पार्ट होता है जिससे दूसरा प्लांट बनता है। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, तो ये लोग बात कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, और एयर हवा चल रहा होता है, तो पॉलन ग्रेन्स इन लोग के नाक में जा भी रहा होता है, ठीक है, फाइन। तो सबके नाक में गया, along with the शिवम ऑल्सो। अब दूसरा टाइम क्या होता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी जिद करती है शिवम की कि मुझे भी ले जाया जाए, मेरे को भी तो पार्टी दोगे ना भाई, तुम पास हो गए हो तो मेरे को भी तो पार्टी चाहिए। तो होता है ठीक है चलो उसी रेस्टोरेंट में ले जाता है। पहला टाइम जब गया था, तो when the first time he visited, the pollen grains which get inside his respiratory tract, अंदर में जाने के बाद उसने क्या किया, तो उसके पास आईजी एंटीबॉडी था, फाइन, आईजी एंटीबॉडी था। तो पॉलन ग्रेन्स जाके इंटरेक्ट किया, तो इसके बॉडी में क्या बन गया, तो एंटी आईजीई प्रोटीन, सॉरी एंटीबॉडी बन गया किसके अगेंस्ट में, पॉलन ग्रेन्स के अगेंस्ट में, ठीक है, बन गया। सेकेंड टाइम ये गर्लफ्रेंड को लेके गया, दोनों खा रहे थे, ठीक है, इसके अंदर में जा रहा था, इसके अंदर में जैसे जैसे जा रहा था, इसके अंदर में कुछ कुछ हो रहा था, कुछ कुछ क्या हो रहा था, तो मुंह में खाना गया, पॉलन ग्रेन्स भी जा रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो इसके अंदर में सीटी मारना स्टार्ट हो जाता है। सीटी मारना इन द सेंस व्हीजिंग साउंड। You heard about the sneezing, wheezing? Wheezing is a whistling sound which is coming from your heart, which is coming from your heart. Fine. इसके बाद थोड़ा देर बाद इसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाना, ये हाफना स्टार्ट कर देता है, डिस्पिनिया, कॉल्ड एज द डिस्पिनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। फाइन। अब इसकी गर्लफ्रेंड इसको देख के हताश बेताश, क्या हो गया इसको, लाइक व्हाट हैपेंड टू हिम, टेंशन में चली जाती है। Are you getting my point? Why second time this much? Because first time बस खाली anti-pollen antibody is made only, but in the next exposure already antigen antibodies was there, तो pollen grains आएगा तो fast reaction होगा, and that will end up with these sign and symptoms. You are understood? Clear? Sir, this is what your type 1 hypersensitivity reaction. फर्स्ट में मतलब हुआ pollen के अंदर गया तो फिर वो हाँ क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट में तुम्हारे बॉडी को पता ही नहीं था ना, नहीं था तो उस समय भी तो सो नहीं कर गया था, नो उस टाइम में नहीं सो किया ना, तो मान लेते मेरे इम्यून सिस्टम अगर नहीं है तो वो कोई बीमारी नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ तुम्हें पता नहीं चलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बीमारी होगा लेकिन पता नहीं चलेगा। नो 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 नो, रिएक्शन होता है। फाइन, इफ देयर विल बी अ नो इम्यून सिस्टम यू विल नॉट गेट इन, यू आर सेइंग कि तुम्हें कोई डिजीज, ऐसा नहीं है ना, लाइक फॉरेन पार्टिकल्स तुम्हारे अंदर में गया, इम्यून सिस्टम नहीं है, तो सीधा अटैक करना कर देगा सिस्टम पे, जाके ब्लॉक कर देगा पार्ट सबको। तो फिर हमको जब पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे बोलेंगे हमको बीमारी होता है? पता क्यों नहीं चलेगा ब्रो? वो नहीं है, मेरे साइन एंड सिम्टम नहीं शो कर रहा था, कैसे पता चलेगा? साइन एंड सिम्टम शो होगा, जो जब होगा तो फर्स्ट टाइम में हमको छींका चाहिए था। First time may not happen because your antibodies is not knowing, and the amount you need a equal, you can say the accurate amount. Like see, बैक्टीरिया तुम एयर ड्रॉपलेट से तुम्हारे अंदर में जाता है, तो दैट इज नॉट कैपेबल इनफ, उसको उतना नंबर में नहीं होता कि तुमको साइन एंड सिम्टम्स को कॉज कर दे। इट टेक्स टाइम, इट ईट योर मील, इट बेसिकली ईट द ब्लड। यस, वो ब्लड को मतलब खाते नहीं, लाइक ब्लड से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू स्टिल नीड मोर क्लैरिफिकेशन। नहीं सर, ठीक है। नो नो नो, द दिमाग इज गुड, यू एब्सोल्युटली अच्छे जगह पे दिमाग लगाए हो, आई एम अप्रिशिएटिंग यू, पर तुमको समझना पड़ेगा कि इफ देयर इज नो इम्यून सिस्टम, ओके, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर में नहीं है, बट स्टिल यू गेट लाइक प्रॉब्लम इन योर बॉडी, still get you the problem in your body, like तुम्हारा lungs, take the example of this is only, तुम्हारा ये lungs है, okay, you have this lungs, you have this lungs, yes, you have these lungs, but internally
these lines, no, they are end up with the small what is called as the alveoli. Okay, तुम्हारे अंदर में ये आएगा, तो ये आएगा, तो ये इस एयरवेज बहुत नैरोज है, इसको ये ब्लॉक कर सकता है, नो, इट कैन ब्लॉक, नो, यस, विदाउट कॉजिंग एनी इम्यून रिएक्शन इट कैन ब्लॉक. तो डिपेंड करता है कि अमाउंट, एंटीजन अमाउंट भी डिपेंड करता है डिजीज कॉज करने के लिए. That's what we discussed, no, multiplications in the bacteria, viruses. Yes? No. Pollen grains, you will be safe from the pollen grains. Yes, it's true. Pollen grains से तुम बच जाएगे. What about the virus? What about the virus? Virus is a filterable. We discussed, no. Yes, sir. It's a filterable. पोलन का जब एग्जाम नहीं है तो वो तो फिल्टर हो ही जाएगा, वायरस हमको करता है. वो कर जाएगा, तो मास्क लगा के खाना खाओगे. ये तो वो हो गया, गाय के मुंह में जो लगा नहीं देते हैं कि कहीं पे वो खा नहीं लेते. चाप फाइन, leave. Okay, now this what we explained in the Shivam is called as the allergy. Which kind of allergy? Asthma. Example of asthma, allergic asthma. दमा हो गया. So asthma can be related with the pollen grains or it can be related with another things. Another example is like दो तरह के ये reactions होते हैं. Sometimes it is with your eyes called as the conjunctivitis. ठीक है, allergic conjunctivitis. Then you have the rhinitis. Inflammation in the nose, running nose. पानी नाक से गिरने लगता है. Okay, पानी नाक से आने लगता है whenever you get too exposed to the antigen. Then what is called as the lips का swelling. Yes? Yeah, herpes is a virus. That's a viral disease. I'm talking about the allergy. Cheilitis. Yes? Cheilitis. Cheilitis. You can say, yes. Then sometimes what is happening, even this is called as the generalized. Then we have the localized also. Like a specific part को target करेगा. तुम्हारे GIT के अंदर में कुछ ऐसा चला गया, तुम्हें डायरिया आ जाएगा, वोमिटिंग आ जाएगा. Are you getting my points? This is the what is called as the allergic. Now talking about the type 2 reaction. This is also called as the, write down, this type 1 is also called as the anaphylatic reaction. This is also called as the anaphylatic reaction. ठीक है, anaphylactic reaction. Then talking about the type 2, type 2 is also called as the cytotoxic. Yes, cytotoxic immune reaction. And the example is autolytic. The example is hemolytic anemia. Example is, I will explain. Hemolytic anemia. So in this case, what is happening? What is the antigen was free. The pollen grain is the free. But here in this case of type 2 reaction, it is also called as the cytotoxic because it is a toxic for a cell. It is a toxic for our cell. If you taking about the RBC is also one cell. तो RBC के ऊपर में, over the RBC membrane, there will be presence of antigen. Fine. And what our antibody is doing, our antibody will start binding over here. Fine. It will bind and it will break the RBC. This is called as the hemolytic anemia. Example is also hemolytic anemia. You can see in the erythroblastosis fetalis. Have you heard this term? Like something called as the erythroblastosis fetalis. What is happening? I will tell you. Like when the mother is Rh negative, we have the blood grouping, no? ABO grouping and Rs positive and Rs negative. You can say antigen basically classification. So Rh is a kind of antigen. So if the mother is Rs negative, fine, he get the baby which is Rs positive. तो first time क्या होगा? तो Rs negative mother जो है वो against करेगी एंटीबॉडी सिंथेसाइज किसके? अपने फीटस के. फाइन. इससे क्या हो जाएगा? तो फीटस का जो RBC है वो मर जाएगा. तो
बच्चा पेट में ही मर जाता है. दैट इज कॉल्ड एज द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस. यू गॉट द पॉइंट? तभी मर जाता है. यस. ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द RH incompatibility. RH incompatibility. Got the point? Yes. Now talking about the third type. Third type is also called as the immune complex. Write it down. Third type is called as the immune complex hypersensitivity reaction. Immune complex hypersensitivity reaction. Fine. Now see, here the antigen was free. Antigen was bounded. Antigen is the bounded form. Bounded means कि वो किसी मेम्ब्रेन के ऊपर में रहेगा, बॉडी के अंदर में किसी टिश्यू के ऊपर एंटीजन रहेगा, वो फिक्स एंटीजन है. हियर इन द केस ऑफ एंटीजन इज फ्री. Fine. Now in this case also the antigen is free. In the type 3 reaction the antigen is free. Fine. So antigen free है और एंटीबॉडी के साथ, like antigen is written as Ag plus एंटीबॉडी के साथ क्या करेगा तो रिएक्शन करके ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएगा. What it will do? It will form the immune complex. ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करेगा तो ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा. What it will do is the inflammation. Clear? Inflammation. And the example you write कि hepatitis B is the one example and something called as the serum sickness. The thing is, in initial time हम लोग इम्यून लेने के लिए ना हॉर्स का सीरम लेते थे, हॉर्स का ब्लड अपने अंदर में डालते थे. ओके, व्हेन द वैक्सीन वाज नॉट देयर तो हम लोग हॉर्स का सीरम इंजेक्ट करते थे. उसके कारण क्या होता था तो हमारे अंदर में यही रिएक्शन होता था. बिकॉज द एंटीजन व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द हॉर्स इज द फ्री. ओके, एंड वी हैव द एंटीबॉडी, तो उससे रिएक्शन होता था एंड वी हैव द इन्फ्लामेशन. बट आज के टाइम में हम लोग वो सीरम वाला लेना बंद कर दिए. आज के टाइम में क्या होता है तो आज के टाइम में ड्रग के कारण होता है. पेरेंटली मीन्स थ्रू द वेसल्स, वी कैन से द वेन्स, जब हम लोग ये लेते हैं दवा लेते हैं उस टाइम में ये रिएक्शंस होता है. इसीलिए क्या होता है तो पहले हम लोग टेस्ट डोज देते हैं, थोड़ा सा दवा डाल के चेक करते हैं कि कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं. नर्स का यही काम है. लाइक दे आर डूइंग दिस, फर्स्ट दे आर इंजेक्टिंग, दे आर चेकिंग कि हाँ उसके अंदर में कोई ऐसे एलर्जिक साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो पूरा दवा देता है. एक ही बार में पूरा दवा नहीं देता. दैट इज कॉल्ड एज द टेस्ट डोज. Fine? Clear? Yes, so this is about your third. The fourth type do not involve any antibody. Fourth type do not involve any antibody. So because antibody is not involved, so it takes time. So it is also called as the delayed hypersensitivity. Write it down. The another name of the type 4 is the delayed hypersensitivity reaction. Clear? And this is done by the T cell. We discussed about the T lymphocyte, no? We have the two lymphocyte which is basically involved in the acquired immunity. One is called as the B lymphocyte, another one is called as the T lymphocyte. B lymphocyte is involved in the antibody synthesis, whereas T lymphocytes work here. So this is called as the cell mediated delayed hypersensitivity, and the cell which is working here is the T cell. Fine. What T cell will do? Whenever antigens comes, the T cell will bind with the antigen. Yes, bind with the antigen, and through the process of called as the phagocytosis, it will engulf, or you can say generate the immune response. Clear? Yes? Written? No problem? Type 2. What you written the type 2 name? Cytotoxic.
Cytotoxic. The example is here. You can example write it down. First one is called as the contact dermatitis. Contact dermatitis. Another one is called as the tuberculin test. Tuberculin prick test. किसका मतलब? Contact dermatitis. It is the inflammation of your skin. It is inflammation of your skin. Skin के ऊपर में छोटे-छोटे जो बोलता है ना चकेता हो जाना. चकेता you know? Hives formation. In English it is called as the चीटी काटती हो जाती है. yes. Hive formation, yes, and itching is there, swelling is there. This is called as the contact dermatitis. Another example I cited is the tuberculin test. This is also called as the Mantox test. It is a test for the tuberculosis. होता क्या है कि पेशेंट के अंदर में जब टीबी का साइन एंड सिम्टम्स आए, रात को पसीना आ रहा है, फीवर हो जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कफ बन रहा है, उस टाइम में डॉक्टर एडवाइस करता है इस टेस्ट के लिए. That is called as the tuberculin test. इस टेस्ट में क्या होता है तो तुम्हारे अंदर में आर्म पे थोड़ा मात्रा में एंटीजन को डाला जाता है. फाइन. निकाल के नहीं चेक करता है, वो देखता है कि वो एरिया अगर रेड हो गया है, स्वेलन हो गया है, इट मीन्स कि तुम्हारे अंदर में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि सबके अंदर में है ऑलरेडी, लेकिन बढ़ जाना इज अ टीबी, तो बढ़ गया है. You got the point? Yes. You understood the allergy. What is mean by the allergy? Now one thing you understand. There are mechanisms by which you can encounter the allergy. ठीक है? Something called as the sensitization. Okay? The process is called as the desensitization. इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं तो स्मॉल अमाउंट में धीरे धीरे एंटीजन डाल के एक्सपोज करते हैं पेशेंट को, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगा तो योर बॉडी इज रेडी टू फाइट विद द एंटीजन. दिस इज कॉल्ड एज द desensitization therapy. Desensitization therapy. Fine. And there are other therapies too. You got my points? Yes? You have any question? No? So let's conclude today's lecture. What we discussed? We discussed about the hypersensitivity reaction. The things which you have to keep in your mind is that it is a exaggerated immune response which destroy our tissue. Okay? Hypersensitivity reactions explain why allergy exists, why different kinds of allergy exist. Fine? On the, you can say, basis of their antigen involvement, we have the 4 classes of hypersensitivity reaction. First one is called as the type. Second one is the third one is the fourth one is the type 4. In the first one, the antibody which is involved is the IgE type and antigen is free. Fine. Second one, IgG or IgM is involved, antigen is fixed over the membrane. Third one, the antigen is free, the antibody which is involved is the IgG or IgM type. Fourth one, no antibody. The cell is involved. Which cells? T cell. Fine. Then we discussed that when antigen antibody react first time, you can say anti-pollen or any you can say antigen triggering substance, against that the antibody develop our body. In the next exposure there will be a massive destruction and sign and symptoms. A common example is the asthma. Then in the type 2, our membrane, if I have some, you can say antigen they are containing, then antibody bind over there and causes their lysis or destruction. Example is the hemolytic, anemia and erythroblastosis fetalis. Now talking about the third type. In the third type, what is happening? Because antigen is free, antibody is there, they will form the antigen-antibody complex and that causes the inflammation. Clear? In the fourth type, there is a cell involved called as the T cell which binds with the antigen and causes the immune response. Example is the contact dermatitis and tuberculin test. And there is a therapy called as the desensitization therapy, by which you are exposing the patient with the little you can say the same antigens, allergens, and then you are
you can say boosting their immune system, then already they have developed the immunity against that. So whenever they will get the exposure, they won't react too much. They won't react too much. You got the point? Yes? Okay, fine. So thank you for having me. Bye. Have a nice day.